Hello everyone, I am Tanu Sharma from BSc Chemistry Honors Final Year. Today my topic of presentation is energy production in living organisms. सभी organisms को अपनी डे टू डे लाइफ में एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हमें खाना खाने से मिलती है। प्लांट्स और बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, सनलाइट की हेल्प से। लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती जिससे वो अपना खाना खुद बनाए, इसलिए उन्हें खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस में हम सबसे पहले रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ऑफ ब्रीदिंग इन केस ऑफ एनिमल्स, फिजिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, द फिजिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेट present on the surface of leaf and the external environment is called external respiration. अब है cellular respiration, biochemical process which occurs within cells and oxidize food to obtain energy is known as cellular respiration. और और वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है ग्लूकोज या अदर फूड मॉलिक्यूल्स के ब्रेक होने पर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वेरियस एंजाइम बायोकैटालिस्ट catalyzes this process. It is the process of converting food energy into ATP energy. This ATP provides energy to cells which they need to carry out the activities of life. The plants obtain water vapor from earth and CO2, sunlight from their environment, and return O2 into it through photosynthesis. Process by which cells obtain energy from complex food molecules depends upon whether or not oxygen is present in their environment and utilized. ये दो तरीके से यूटिलाइज होती है। फर्स्ट, वेदर ऑक्सीजन प्रेजेंट इन देयर इन्वायरमेंट और नॉट। सेकंड, वेदर दे कैन यूटिलाइज O2 और नॉट। ये भी दो तरीके से होती है। रेस्पिरेशन इज टर्म्ड एरोबिक व्हेन O2 इज यूटिलाइज्ड, और रेस्पिरेशन अनएरोबिक होता है जब O2 यूटिलाइज नहीं होती। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरो मीन्स एयर, प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और it leads to complete oxidation of organic substrate. It is most common in higher organisms, both plants and animals. Anaerobic respiration, process which takes place in complete absence of O2. It leads to incomplete oxidation of organic substrate. It takes place in lower oxidation organisms such as bacteria and in higher animals under limiting conditions of O2. इसका एग्जाम्पल है muscles when oxygen present is insufficient. अब C6H12O6 देगा में 2 इथाइल अल्कोहल प्लस 2 CO2 के मोलिक्यूल प्लस 2 ATP। और एरोबिक का एग्जाम्पल है C6H12O6 को जब 6 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये हमें देगा 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस 38 ATP के मोलिक्यूल्स। एरोबिक में इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट्स एंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स। और एनारोबिक में इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। सबसे पहले ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होगा और फिर O2 की एब्सेंस में वो लैक्टिक एसिड में चेंज होगा। व्हेन O2 इज अवेलेबल वंस अगेन, lactic acid is converted back to pyruvate and enters the mitochondria. Many common processes occur in both aerobic and anaerobic respiration. Oxidation reaction to release chemical energy from complex food. Use of coenzymes as carrier of hydrogen to remove hydrogen from organic molecules, leading to reduction of coenzyme and oxidation of the substrate. Most of hydrogen carriers are NAD and FAD. These are later reoxidized, releasing energy for ATP synthesis. Use of high energy phosphate compounds like ATP for higher energy transfer. Energy production in living organisms. All living organisms require energy for different daily activities. We get energy from the plant in the form of food because only green plants and cyanobacteria can prepare their own food by photosynthesis and stored light energy in the bonds of complex organic molecules. Carbohydrates, fats, proteins. In different organisms, there occurs a slow stepwise respiratory substrate molecule, carbohydrates, fats, proteins, through cellular respiration in presence of different enzymes and coenzymes. Finally, energy is stored in mitochondria in form of ATP. The stored energy as ATP is further utilized for various cellular metabolic activities. So ATP acts as energy currency of cell. फिर है कैपिलरी।
ये इसका स्ट्रक्चर बना रखा है थोड़ा सा। द फेवरेट सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज. So all carbohydrates are initially being converted into glucose before their involvement in respiration. Glucose CO2 plus H2O plus energy. Step during respiration. सबसे पहला स्टेप है ग्लाइकोज इन साइटोप्लाज्म, फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेटरी पाथवे. ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, Krebs cycle and oxidative phosphorylation, etc. and chemosmosis in mitochondria. In this process, ग्लूकोज के 6 कंपाउंड होते हैं वो पायरोवेट के 3 कंपाउंड्स में चेंज होंगे, 2 मोल्स पायरोवेट होगा. अदर सबस्ट्रेट लाइक फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स कैन आल्सो बी रेस्पायर्ड. फैट्स दो टाइप के होते हैं. फैटी एसिड्स डिग्रेडेड टू acetyl CoA before entering in the respiratory pathway. Glycerol degraded to phosphoglyceraldehyde PGAL before entering in the respiratory pathway. Further, fatty acids can be synthesized from acetyl CoA by withdrawing it from respiratory pathway. Similarly, glycerol can be synthesized from PGAL by withdrawing it from respiratory pathway. Proteins are break down into amino acids by proteases. Amino acids degrade to pyruvic acid or acetyl CoA or some other intermediate of Krebs cycle before entering in the respiratory pathway. As respiratory pathway involved both in catabolism and anabolism, so respiratory pathway is an amphibolic pathway rather than a catabolic pathway. Similarly, amino acids can form pyruvic acid. Similarly, amino acids can form pyruvic acid, etc. by withdrawing it from respiratory pathway. Glycolysis. It is given by embedded EMP pathway. It occurs in cytoplasm, always anaerobic whether O2 is available in the cell or not. It involves three processes through 10 steps which are catalyzed by specific enzyme coenzyme. Phosphorylation of glucose. ग्लूकोज चेंज होगा ग्लूकोज 6 फोस्फेट में इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज और Mg2 पॉजिटिव आयंस होंगे. एटीपी पीआई प्लस एडीपी. फर्स्ट स्टेप हमेशा अनएरोबिक होगा. एनर्जी रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस ये है एटीपी. फिर ग्लूकोज 6 फोस्फेट फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में चेंज होगा फोस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज और पीआई इक्वल इनऑर्गेनिक फोस्फोरस. फिर फ्रक्टोज 6 फोस्फेट फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट में चेंज होगा जिसमें 6 कार्बन के कंपाउंड होंगे एडीपी एएमपी बिकॉज ऑफ रिपल्शन. एटीपी कन्वर्ट होगा एडीपी प्लस पीआई में. इसमें फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज और Mg2 पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में होगा. स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज. फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट एल्डोज की प्रेजेंस में होगा डी हाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट और एल्डोज की प्रेजेंस में होगा ग्लाइसरल्डिहाइड फोस्फेट और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट में चेंज होगा इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइफॉस्फेट आइसोमेरेज. ऑक्सीडेशन बाय डिहाइड्रोजनेशन. 2 ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट चेंज होगा 2 मोल ऑफ 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरेट और ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट की प्रेजेंस में डिहाइड्रोजनेज और NAD पॉजिटिव NADH में चेंज होगा. फिर 2 मोल ऑफ 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरेट चेंज हो गए 3 फोस्फोग्लाइसरेट में इन प्रेजेंस ऑफ फोस्फोग्लाइसरेट काइनेज. Mg2 पॉजिटिव कोफैक्टर है यहाँ पे. अब 3 फोस्फोग्लाइसरेट चेंज होगा 2 फोस्फोग्लाइसरेट में फोस्फोग्लाइसरेट म्यूटाइज की प्रेजेंस में और ये चेंज होगा फोस्फोफिनोल पायरोवेट में इन प्रेजेंस ऑफ फिनोलेज और फिर ये पायरोवेट में चेंज होगा इन प्रेजेंस ऑफ पायरोवेट काइनेज. नेट एटीपी प्रोड्यूस 4-2 ATP. ग्लाइकोलिसिस डायरेक्टली. Indirectly 2 NADH equals 6 ATP. Oxidative phosphorylation. Total ATP produced equal 8 ATP. अब है Krebs cycle. Tricarboxylic acid. It occurs in matrix of mitochondria.
इसमें दो पायरोवेट की मोलिक्यूल दो एसिटाइल CoA के मोलिक्यूल में चेंज होगी इन प्रेजेंस ऑफ पायरोवेट डिहाइड्रोजनेज TPP लिपिक एसिड Mg2 पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में। देन सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंस में सिट्रेट में चेंज होगा और फिर सिट्रेट सिस एक्कोनाइट्रेट में चेंज होगा और फिर ये H2O की प्रेजेंस में और एक्कोनाइटेज की प्रेजेंस में आइसोसिट्रेट में चेंज होगा और ये NAD पॉजिटिव जो कन्वर्ट होगा NADH में इसकी प्रेजेंस में ऑक्सैलोसक्सेनिक में चेंज होगा और फिर कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में चेंज होगा। फिर अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में सक्सेनिक सक्सिनाइल CoA में चेंज होगा। देन सक्सिनाइल CoA सिंथेटेज की प्रेजेंस में सक्सिनेट में चेंज होगा। फिर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में फ्यूमरेट में चेंज होगा। फिर फ्यूमरेट की प्रेजेंस में मेलेट में चेंज होगा। देन मेलेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में ऑक्सैलो एसीटेट में चेंज होगा और जो फिर से सिट्रेट में चेंज हो जाएंगे। ये क्रैब साइकिल है। टोटल ATP प्रोड्यूस 8 NADH इक्वल 24 ATP, 2 FADH2 इक्वल 4 ATP, 2 ZTP इक्वल 2 ATP। ये क्रैब साइकिल है। क्रैब साइकिल प्रोड्यूस CO2 दैट यू ब्रीथ आउट। फ्लो चार्ट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। ग्लूकोज के 6 कार्बन है इसमें, ग्लाइकोलिसिस होगी और ये चेंज होगा पायरुवेट में 3 कार्बन है जिसमें साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया 2 ATP यूज्ड इन यूकैरियोट्स। O2 प्रेजेंट 2 CO2 2 NaOH जो चेंज होगा एसिटाइल CoA में जिसमें 2 कार्बन के कंपाउंड होंगे और ये चेंज होगा सिट्रिक एसिड में इन प्रेजेंस ऑफ 6 NADH 2 FADH2 एंड 2 ZTP। ये चेंज होगा फिर सिट्रिक एसिड में और सिट्रिक एसिड चेंज होगा 4 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ETC एंड केमियोसिस की प्रेजेंस ETC एंड केमियोसिस हो गई। और साइटोप्लाज्म इन एब्सेंस ऑफ O2 फर्मेंटेशन होगी। फिर फर्मेंटेशन दो तरह की होगी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। हैव यू एवर बीन वंडर हाउ योर मसल्स कीप वर्किंग व्हेन यू डूइंग vigorous exercise in low O2 due to lactic acid? These processes occur due to alternative glucose breakdown pathways that occur when normal O2 using aerobic cellular respiration is not present around to act as an electron acceptor and picks up protons to form H2 at the end of electron transport chain. In molecules, when O2 is sufficient, C6H12O6 plus 6O2, 6CO2 plus 6H2 plus 38 ATP माइनस इसमें से 2 करेंगे तो 36 मिलेगा। In muscle, when O2 present in insufficient reaction, continue to proceed in cytoplasm. C6H12O6 ये देगा 2 लैक्टिक एसिड के मोलिक्यूल प्लस 2 ATP इन मसल्स। फिर है पोस्टर effect in which inhibition of anaerobic respiration occurs in presence of O2 called posture effect। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बता रखा है इसमें। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली दिख रही है जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। ये जो स्ट्रक्चर बना रखा है ये मैट्रिक्स का है, इसके अंदर ये इनर मेम्ब्रेन की स्पेस है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन it is a process in which ATP is formed as a result of the transfer of electrons from NADH or FADH to O2 by a series of electrons carriers. This process, which takes place in mitochondria, is a major source of ATP in aerobic organisms. Oxidative phosphorylation involves two interconnected processes: electron transport chain, metabolic pathway present in the inner membrane of the mitochondria through which electrons from NADH, FADH2 passes from one protein complex carrier to another carrier in a series of redox reactions and oxygen sites at the end of the electron transport chain. Accept electron and peaks up protons to form water. Chemosis process in which energy released during electron transport chain reactions
is captured as a proton gradient and which is then used to make ATP. In absence of oxygen during vigorous exercise, when a person is not breathing in enough O2, there is no one to accept the electrons and thus electron transport chain will stop working. So no ATP will be produced by chemosis. केमिसिस में कोई भी एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होती है और बिना एटीपी के सेल्स कैन नॉट कैरी आउट द मेटाबॉलिक प्रोसेस जो कि बहुत से फंक्शंस के लिए चाहिए होती है एंड आफ्टर ए लॉन्ग इन अ पीरियड ऑफ टाइम सेल में इवन डाई स्टेप्स ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन delivery of electrons by NADH and FADH2, reduced electron carriers NADH and FADH2 from other steps of cellular respiration transfer their electrons to molecule near the beginning of the transport chain. In the process, they turn back into NAD positive and FAD positive, which can be reused in other steps of cellular respiration. Electron transfer and proton pumping. As electrons are passed down the chain, they move from a higher to a lower energy level, releasing energy. Some of energy is used to pump H positive ions, moving them out of the matrix and into the inner membrane space. This pumping establishes an electrochemical gradient, splitting of oxygen to form water. At the end of the electron transport chain, electrons are transferred to molecules O2, which splits in half and takes up H positive to form water. Gradient driven synthesis of ATP. As S positive ions flow down their gradient and back into the matrix, they passes through an enzyme called ATP synthase, which harness the flow of protons to synthesize ATP. ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है. Next, enzymes. The globular proteins which acts as biochemical catalyst that is catalyze specific biological reactions at a very high rate under mild conditions of temperature and pressure. Nature of enzymes. Some enzymes are simple proteins made of alpha amino acids only. Some other enzymes are conjugated protein that are protein part. The enzyme associated with some non-protein which control the biological activities. Prosthetic group. The non-protein part that is metal ion or an organic molecule associated with the protein part that is enzyme is called prosthetic group. Types of prosthetic group दो टाइप के होते हैं कोफैक्टर और कोएंजाइम. कोफैक्टर में है the non protein part that is metal ion associated with protein part enzymes is called cofactor. इसका एग्जांपल है Fe in hemoglobin. Coenzymes the non protein part that is an organic molecule associated with protein part is called coenzymes. Example ATP, NAD, NADP, lipoic acid, etc. Coenzymes are the non-protein organic molecules which activities the inactive protein enzymes in biological reactions. Fastest enzyme is carbonic anhydrase. Digestion, the process of conversion of complex food non-diffusible food into diffusible food with the help of enzymes is called digestion. Only diffusible food can enter in blood vessels, semi-permeable membrane, and we get energy. Small digestion of carbohydrates by slavery amylase CE. SE. Digestion of protein by pepsin, trypsin, basic medium. Digestion of carbohydrate fats by carboxyl peptidase lipase. Characteristics of characteristic features properties of enzymes. Enzymes are the biocatalyst that enhances the speed of reaction. Enzymes are highly specific in nature. Small quantity of enzymes can catalyze the reaction. Enzymes can only act at temperature 37 degrees Celsius. Enzymes can only act at temperature 37 degrees Celsius. Enzymes can act only at particular pH. The activity of enzymes are controlled by inhibitors. Their molecular mass ranges from 10 raised to the power 4 to 10 raised to the power 6 gram per mole and diameter 10 to 100 nanometer. Time of food to stay in different parts of alimentary canal. Mouth pH 5-7 enzymes, salts, biopolymers 5 to 6 OS. ये स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें पीएच होते हैं
6 to 7.5. Enzymes होते salt while biopolymers एजिटेशन 1 2 आवर्स. स्टमक की पीएच होती है 1 to 3. एंजाइम्स होते हैं साल्ट्स, इसमें प्रेजेंट होता है बायोपॉलीमर्स एजिटेशन 30 मिनट to 4 आवर्स. कोलन में पीएच होती है 5 to 7. एंजाइम्स होते हैं बैक्टीरिया एजिटेशन और 12 to 24 आवर्स टाइम होता है. सब स्पेसिफिक नेचर ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. कार्बोहाइड्रेट्स अमाइलोज माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज आइसोमाल्टोज. प्रोटीन्स चेंज होंगे पेप्सिन में, ट्रिप्सिन में, पेप्टिडेज में, और ये चेंज होंगे फिर एमिनो एसिड्स में. फैट्स लिपेज में चेंज हो गए और फिर फैटी एसिड्स में चेंज हो गए. मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. द मोस्ट पॉपुलर मैकेनिज्म फॉर एंजाइम एक्शन इज लोक और की. मैकेनिज्म mechanism it involves the following steps: binding of enzyme to the substrate reactant to form enzyme substrate complex. Enzymes have active sites of specific size and shape, so only specific substrate can fit in the active sites by forming H bonds, van der Waals forces, and form enzyme substrate complex. Formation of product in the complex. Enzyme lower the activation energies of substrate react to form the products in the complex. Substrate react to form an end product. Release of product from enzyme surface. Products have no interaction with the active sites of enzyme, so they leave the enzyme surfaces. Now active site is again available for fresh reactant molecule and above process is repeated again and again. एंजाइम रिएक्टेंट की प्रेजेंस में चेंज होगी रिएक्टेंट एंजाइम में. ईआर कॉम्प्लेक्स से फिर जो एंजाइम रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स बना है वो फिर प्रोडक्ट में चेंज होगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में. देन ये अगेन एंजाइम में चेंज होंगे. Effect of temperature and pH on mechanism of enzyme action. As temperature increases, molecules start to gain kinetic energy. Thus, rate of reaction start increases at a particular optimum temperature. After this temperature, the rate of reaction start to decrease as pH changes. The shape of reactive site will change. Due to this, rate of reaction no longer will change. So, enzymes works at a reaction at particular pH. Induced fit theory for mechanism of enzyme action. This model explains why some enzyme can act on more than one substrate. It involves following steps: binding of enzyme to substrate to form enzyme substrate complex. The substrates come nearer to enzymes having inactive reactive sites binds to the active site and induces or cause a change in reactive site of enzyme so that it is complementary fit enzyme substrate complex. सेकंड और थर्ड है जो वो लास्ट की तरह ही है. एंजाइम रिएक्टेड की प्रेजेंस में रिएक्टेड एंजाइम में चेंज होगा. एंजाइम ही रिएक्टिव साइट है ये. फिर एंजाइम रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स बनेगा प्रोडक्ट में चेंज होगा. एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स अगेन एंजाइम में चेंज होगा. Now active site of enzyme returns to the inactive state after the products are released and again available for fresh reactant molecule and above process is repeated again and again. एप्लीकेशन एंजाइम्स की. पहली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है. मैन्युफैक्चर ऑफ वाइन एंड बियर बाय फर्मेंटेशन. कार्बोहाइड्रेट्स. इन्वर्टेज ई कन्वर्ट सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. जाइमेज कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू इथेनॉल. डायस्टेज convert starch into maltose. Maltose convert maltose into glucose. Urease convert urea into ammonia and CO2 in acidic medium. Pepsin convert proteins into ammonia acids in stomach. Lactobacillic convert milk into curd. Curing of disease. इसकी दूसरी एप्लीकेशन है. एंजाइम streptokinase used to dissolve the blood clot that it checks the heart attack. Enzyme phenylalanine hydroxylase is necessary to avoid disease phenylketonuria. This disease occurs due to accumulation of compounds in the body leading to brain damage and mental retardation in children. Enzymal tyrosinase necessary to avoid disease albinism. In this disease, the pigment melanin cannot be synthesized, hence hair, skin, and iris are without pigment.
Production of medicine, insulin, penicillin, etc. In the production of cheese by coagulation of milk, in the manufacture of sweet syrup from cornstarch, antagonists or enzyme inhibitors और agonists पहले इसमें पढ़ेंगे इनहिबिटर एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में ड्रग्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली blinds block the receptor site and inhibits the natural function that prevents the binding of drugs with receptor protein enzyme are called antagonists. These are useful when blocking of messages required. अब है agonists. Drug which maintain the natural function in the absence of natural messenger are called agonists. Type of enzyme inhibitor. Competitive inhibitor drugs which directly competes with the natural substrate for their attachment on the reactive site of enzymes and directly blocks the reactive site of enzymes are called competitive inhibitors. Non-competitive or allosteric inhibitors, drugs which do not directly compete with the natural substrate for their attachment on the reactive side of enzymes by modifying the shape of reactive sites by blending with allosteric sites present near to the reactive sites. Interactions that can be present in between substrates and active site of enzymes are ionic bonding, H bonding, van der Waals interaction, dipole-dipole interaction. टारगेट मोलिक्यूल इनहिबिटर्स हैं सबस्ट्रेट है और फिर है एंजाइम रिसेप्टर ये रिएक्टिव साइट है इसकी ये कन्वर्ट होगा टारगेट मोलिक्यूल इनहिबिटर्स में एंजाइम रिसेप्टर और फिर ये सबस्ट्रेट होगा coenzymes the non protein part in an organic molecule such as vitamins like thiamine riboflavin niacin etc associated with protein part enzymes is called coenzymes. The coenzymes are the non-protein organic molecules which activates the inactive protein enzymes in biological reactions. Coenzyme is a complex non-protein molecule which is temporarily bound to an enzyme and acts as a link between metabolic pathways series of biochemical reaction. Most coenzymes are vitamins or are derived from vitamins required for synthesis of coenzyme. The water-soluble vitamins generally act as precursors to coenzymes. Example: coenzyme derived from pantothenic acid, vitamin B5. Coenzyme derived from niacin, vitamin B3, NAD, and NADP. Coenzymes derived from lipoic acid. Coenzymes derived from thiamine, vitamin B1, thiamine pyrophosphate. Some questions. Some enzymes require blank for activity cofactor coenzymes. Coenzymes derived from pantothenic acid, vitamin B5, coenzyme A. Pantothenic acid is precursor for coenzyme A, that it is used in synthesis of coenzyme A. The active form of coenzyme is formed when the vitamin B5 forms a peptide bond to cysteine followed by decarboxylation of the cysteine residue and then combines with the derivative of DNA. अब है coenzymes derived from lipoic acids. Lipoic acids forms an amide link to a specific lysine residue of certain enzymes. The lipoamide prosthetic group acts as an acyl carrier in Krebs cycle. Lipoic acid may not be a vitamin. No dietary deficiency has ever been observed, and some evidence suggests that humans can synthesize lipoic acid. It is an essential cofactor for the oxidation decarbonylation of alpha keto acids, where it linked to alpha amino group of lysine residue of the enzymes dihydrolipoyl transacetylase. It is one of several prosthetic groups in the multi-enzyme lactate dehydrogenase complex. Coenzyme derived from vitamin B is thymine. Vitamin thymine converted to the coenzyme thymine pyrophosphate in an ATP dependent reaction. Thymine has aminopyrimidine ring and thiazole ring linked by methylene bridge.
In thymine and ATP and TPP, thiazole ring stabilizes charge and electron transfer. It is a coenzyme required for certain types of oxidative decarboxylation reactions of pyruvate to form acetyl-CoA in Krebs cycle, including reactions catalyzed by pyruvate dehydrogenase complex and released enzymes in CHO metabolism. It is an essential coenzyme involved in external extraction and cellular process in catabolism of sugar and amino acids. TPP is also important coenzyme for 1-pyruvate dehydrogenase PDH and 2-alpha ketoglutarate dehydrogenase catalyze reactions associated with Krebs cycle that convert alpha ketoglutarate to succinate. 3 transketolase catalyzed reaction in glycolysis, that is glucose 6 phosphate to ribose 5 phosphate. Deficiency of pyruvate. Thymine leads to accumulation of pyruvate in blood